Hey, what's up? मेरा नाम है रोहन कारियापा and we are back with possibly the fastest album review this channel would ever see. Today we would be reviewing Krishna's sophomore called Still Here. Commitment वाले issue bro, I don't ever see love. Life marathon, everybody trying to keep up. थोड़ा फेम पाके लगे मिले जीत जब चमचे घूमे इनके आसपास जैसे टी कप. मैं इस एल्बम की ओवरऑल रिव्यू पहले दे दूंगा and then we'll go on and rank the 9 songs from worst to best order based on various criterias. Talking about the album, Still Here is a project that signifies Krishna's roller coaster journey in the hip hop scene. Album में कृष्णा की hip hop journey के constant rise और falls को बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस किया गया and the fact that Krishna is still in the scene unlike most of his earlier contemporaries is the plot behind the name of the album. It has a total of 9 tracks out of which 3 were pre-released and have performed exceedingly well. इस एल्बम को अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो you'll see the effort Krishna has taken to balance things out. It has commercial tracks to boost the numbers, a trap and a boom bap song that briefly brings in the new sound to the album. A few tracks where he's playing it safe and giving his audience what they want. And when I say that, I mean Krishna ki audience want heavy intelligent bars. Now let's talk about one major positive and negative thing about this album. Tell me who run it. बंदूक चले बैम जैसे भू बने. दिल्ली शहर if you really want smoke क्या करेगा चौक पर दूषण है. The primary negative for me in this whole album was minimal experiment done by Krishna in terms of his tone variation. And to make it very clear, when I say change the tone or vary the tone, I don't mean fake the voice. हर इंसान की आवाज में बहुत सारी टोन्स का पोटेंशियल होता है एंड वो आप एक्सपेरिमेंट कर करके ट्राई कर करके अपने हर मूड के सॉन्ग्स के लिए डिफरेंट टोन खोज सकते हो अपनी ही आवाज में. फॉर एग्जाम्पल इन वॉइस ओवर्स, ज्वेलरी एंड प्रॉपर्टी की एड्स आर सपोज टू बी मेलो. For example, Brigade Retail's first venture was the iconic world-class Orion Mall at the Brigade Gateways. Whereas other youthful brands like suppose Cold Drink or a noodle brand would have a lot more energetic and youthful voiceover like Pepsi, har ghoot mein swag hai. Getting the point. Similarly, in Raftar's Mr. Nair album, you can see different shades of his tone ranging from Beshak to drama to proud and more. मेरे को इस पर्टिकुलर एल्बम में वो टोन वेरिएशन थोड़ा मिसिंग लगा. The biggest positive of this album was its intelligent, smart writing. Almost every track will have at least one bar that will present the opportunity for you to go, oh bhai kya mast bola hai. And along with that, even the mellow tracks had a few hard-hitting lines जिनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात कर ही लेंगे. हमने ओवरव्यू ले लिया. Now let's move on to the next segment and arrange the tracks from worst to best order. Also please note कि ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन रैंकिंग नहीं है, ये मैं गाने लास्ट 10-12 दिन से सुन रहा हूँ. इनमें से ऐसे कुछ ट्रैक्स हैं जिनको मैंने जब पहली बार सुना था मुझे बहुत पसंद आए थे, बट दीज ट्रैक्स हैव ग्रेजुअली डाइड डाउन इन द पास्ट 1 week और सो. एंड देन देयर वर फ्यू ट्रैक्स जिनको मैंने पहली बार सुन के बोला था यार ओके ओके है एंड नाउ आर वन ऑफ माई फेवरेट्स. सो फील फ्री टू कॉमेंट कि आपके हिसाब से वर्स्ट टू बेस्ट रैंकिंग क्या है अभी एंड देन कम बैक 10 days later to see how it has changed. It's a good experiment to carry out. Moving on. Number 9 पर है सजाए मौत. Now I know a lot of people are going to hate me since this was one of the most awaited tracks of the album, but for me सजाए मौत didn't work that well. देख के मुझे मत भौंक एक शब्द बोले ऑफ दैट्स टू मच टॉक. जी-टाउन बॉयज मेरा ब्लॉक करे रैप साउथ वेस्ट दैट्स टू मच सॉस. दिल में भरा है खौफ तू बड़ा है सॉफ्ट तू डरा है बहुत. इनको चढ़ा है शौक तो लगा है चौक ये गाना है सजाए मौत. पहली बार जब मैंने गाने को सुना था I found myself grooving like a maniac on Raftar's verse. But after listening to it for about 15 times, the only positive we can take away from this track is Raftar's new tone where he's added a lot more bass in his vocals. Loved that experiment by Raftar and I think that has worked well for him in this track. अब होंगी मिलके बातें दिल्ली में मिलेंगे दिल मिलाते गाने वाने वाली करे फिल्मी बातें मिले धन धन भर दूंगा इनमें चाटे बिन बता के मिलूंगा ना दिन बता के जिन लगा के मिलूंगा ना जिम लगा के जिम में बातें मेरे मिले जिस जगह पे झंझनाट कानों में बिन पटाके. This track seems a little empty to me and reminds me of Bag by Divine and Krishna. For me, Sazae Maut did not meet the expectations and hence is placed at number 9th. बातें की लगी मुझे बेकार अगर नाम नहीं लिया मेरा एक बार. If it's dollar sign then it's KR रहमान देता शॉट्स जैसे AR. Number 8 पर है track named Dream. I just had a dream since I was just a teen. करना चाहता था मैं रैप बनाना चाहता था मैं scene. Yeah, I just had a dream. जब इनको ना यकीन put my city on my back आज scene है scene.
Dream, again, like Sazai Moth, was a little fascinating to listen to at first, but that fascination died really quickly. 14 साल लंदन शहर लिखा पहला रैप वो था मोमेंट फेल इन लव विद द पेन एंड पैड मेरे पास भी था व्हील जैसे मेन इन ब्लैक स्कूल में देते धमकी मैं भी सन की आज सेंड इट बैक Dream is a very unlikely Krsna track. Krsna is bringing out his vulnerabilities and falls on the beat, but once you listen to this track for a couple of times and you know the story he's telling, this track dies down really quickly. And the main reason is कि ये जो Dream गाना है, this is very specific and personal to Krishna's life story, and बहुत सारे लोग इस गाने से relate नहीं कर पाएंगे. स्कूल की कॉपी के पीछे लिखता था लिरिक्स अपने फेवरेट रैपर के फ्लो भी करता था मैं मिमिक ऐसे निकले 2 साल I thought it was finished पर 18 पे कॉलेज में मेरी बनने लगी इमेज. On the contrary, a track like 1 से 23 was also a storytelling rap where Karma was telling us his story. But apart from that, the track in itself was worthy of hitting the replay button multiple times. Dream for me was a good track, but not a track I would want to listen to again and again. Moving on. स्कूल का सबसे पॉपुलर रैपर था ट्रॉय रेडियो पे उसके गाने एवरीबॉडी न्यू द बॉय उसने नाम दिया मुझे अंडरकवर था क्योंकि शक्ल से शरीफ but on the mic I fuck it up. Na Hai Time would be placed at number 7th spot for me. मेरे पास ना टाइम कॉल करे पर बिजी मेरी लाइन सुबह शाम on the grind जब तक दिखे नहीं मुझे डॉलर साइन. There's nothing majorly wrong with this track and neither do I have any problems with trap songs. But अगर ना है टाइम को कृष्णा के फर्क नहीं पड़ता या आदत से कंपेयर किया जाए तो for me it falls a little short. Oh no, तू है कौन I don't know चाहिए money चाहिए fame चाहिए दोनों बोलो कहाँ है जोजो दगा देके गए अपना दिखते बोलो. Again, the track is decent, but I did not find myself humming the track a lot, and that's why it's placed as low as number 7th. कॉल करे मुझे जैसे हम है दोस्त यार तुम ना जानते मुझे हम ना कभी close यार. Number 6 पे है track जिसका concept and thought was a class apart. Villain featuring Karma and Ikka. The hook was good. However, I feel कि the hook was a little too wordy, but still it was catchy enough, so serves the purpose. इस खेल का मैं विलन हाँ विलन लगूं जैसे अमरीश पुरी अपनी कला को दी है मैंने भी जान फिर भी मिला नहीं है नाम मैंने प्राण जैसे जंजीर तोड़ी. All the verses were great too, but something I did not understand was Karma's inclusion in the track, because when we say villain, when we use villain as an adjective, we can relate Ikka and Krsna to that adjective, but Karma has a very nice guy image in desi hip hop scene, and मैं personally Karma को villain जैसे adjective के साथ associate नहीं कर पाता हूँ. Being human के मुंह खोटे के मैं पीछे सलमान हमने सीन करा किल पर कोई और बदनाम. Having said that, the track was good, a very good track, and placed at number 6 spot. बड़े ईगो ये बने रखे हीरो around these rappers I'm kg like a kilo account में है zeros get green जैसे सीलो सारी footage खा के ये दे रहे हैं मुझे B-roll. Number 5th पर है the boom bap track of the album What's My Name. If there's a track that grew on me slowly, it has to be this track. मतलब पहले सुन के मुझे ठीक ठीक लगा और बाद में मुझे बहुत ज्यादा सही लगने लग गया. Who's that? The king better crown me हर line metaphor जैसे rap में है boundary. बोला मैं हूँ king better crown me rap में तुम junior लगते हो Robert Downey. In this track, you will find Krsna in the most authentic old school avatar. This track in particular had some of the best double entendres and references in the whole album. आजकल ये lightweights करे मेरा time waste mind paper shit might get ugly जैसे blind dates. Grind take when I rhyme बढ़ता crime rate ये है dollar sign हर line करे define The grade. sound of this track was a little different from all the other tracks, and some parts of this song were catchier than the actual hook of the song. Late आया मैं करूँगा spit fire ये करेंगे retire I'm taking this shit higher whoa chill आया पर तुझ में ना skill पाया ink ज़ाया करके भी जो ना लिख पाया whoa. And that brings me to the problem. The only problem with this track was the hook. Hook was very average, okayish, and that is the reason it is placed on number 5th spot. इनके lips छोड़ू नीले जैसे मिले grips जल्दी फाड़ू rapper जैसे birthday पे मिले gifts. Placed on number 4th is Roll Up. It is always difficult to compare pre-release tracks to the other ones, but having said that, Roll Up did what it was supposed to do. It was a commercial track, and the hook, hands down, has to be the best hook in the album. When I roll up सारे लौंडे फेंके gang signs everybody knows when I roll up
डे नाइट मैं तो राइड करूं स्लो. Both Krishna and Badshah brought their A game in the verses. The beat was good. The lyrics in both the verses were good, but weren't overtly complicated just for the sake of it. So this track was very good. Roll Up is hence placed at number 4. थोड़ी बुद्धि गरम करवाना लियो गुद्दी गरम पीरा गड़ी के फ्लाईओवर जैसे हाई वेस्ट दिल्ली के लौंडे हम कुत्ती फरम भाई. Number 3 पर है Krishna's favorite track from the album, the intro, Still Here. ये है गहरा दर्द, ये है कड़वा सच. डील विद द डेविल, ये है मेरा कर्ज. ली थी जिम्मेदारी, ये है मेरा फर्ज. क्यों बने सारे यहाँ शेर बिना किए अर्ज. This is yet another expressive, a little emotional track by Krishna in this album, and especially the section that starts after the first 4 bars. Man, those 25 seconds of this track has to be my favorite bit from the whole एल्बम. उस छोटे से सेक्शन को सुन के मुझे लगा कि इसको बहुत ही डेप्थ से कृष्णा ने लिखने की कोशिश की है. बुलंद है मेरे हौसले, हाँ देखे मैंने आते जाते बहुत से. हाँ इस दुनिया से जाना अनजान ये मेरा खौफ है. शायद सुने मुझे मेरी मौत पे है. हाँ इट्स अ कोल्ड प्लेस, लाइफ भी एक रैट रेस. ये है उनके लिए जिनके जिंदगी में सैड फेस. होप दिस म्यूजिक हेल्प्स यू थ्रू द बैड डेज. आसपास खाली बोतलें और भरी एशट्रेज. Also, the last bit of the intro is same as the last bit of the key freestyle, which was the album announcement track. मुझे सब दिखे क्लियर, दिल में ना फियर, हसल मेरी सिंसियर. हाँ मुझे सब दिखे क्लियर, किया परसिवियर इसलिए I'm still here. मुझे सब दिखे क्लियर, हसल मेरी सिंसियर. मुझे सब दिखे क्लियर, दिल में ना फियर. मुझे सब दिखे क्लियर, किया मैंने परसिवियर. मुझे सब दिखे क्लियर. That's why I'm still here. Still Here, the intro of the album, is placed at number 3 spot right now. But I won't be surprised if it jumps to, let's say, number 2 for me in the coming days. But right now, it's at number 3. No, I don't fall for that. इनको तो चाहिए थोड़ा प्यार, I don't know for that. रात गुजारूं स्टूडियो में देना call for cabs. Dedicate करिए life and that's all for rap. Number 2 पे है Living Legend. There is a reason why Living Legend was the first track to be released from this album. This is the outro of the album, and it celebrates the grandeur of the album and Krishna's journey in every way possible. The beat is majestic, the hook and the little detailings that are there in the song is magnificent. अरे अरे क्यों लगे ये डरे डरे, देखे मुझे आगे बढ़े तो सड़े पड़े ये खड़े खड़े. चले पड़े हम ऐसे नहीं पले बड़े, मुझसे क्यों ये लड़े मरे, हार भी अब इनके गले चढ़े. Kudos to Krishna and Rashmeet Kaur, but a huge massive shout out going out to the sound engineers who were involved in this song, because this song sounds larger than life because of the way this song was packaged. Living legend, living legend, living legend till I die. कठिन रास्ते तू जांच ले, हम हाफते नहीं, सांप भरे घास में हम फासले से भागते नहीं. छिपे इनके राज पैसे बांट ले, ये नाचते भी रैप मेरी यार तो फिर लड़ूंगा समाज से. Living Legend is perfectly placed at number 2 for me, and what a great choice as the last song of the album. Legends never die, they rise करेंगे fight, के lies करे divide पर guys करे deny. ये grind करे भाई तो rise करेगा high, सच्चाई करेगा right तो hype बनेगा mic पे. Number 1 पे मैं कौन सा ट्रैक प्लेस करने वाला हूँ, इसमें कोई सस्पेंस अभी रह ही नहीं गया, especially if you watched my interview with Krishna. It has to be the interlude of the album, Fall Off. हाइप बने जब से मेरी हाइप बने, लाइफ में ना मिले मुझे मेरे सगे भाई बने. माइंड करे पर कभी ना ग्राइंड करे, जेनोसाइड लगे जब माइक पे मेरी थोड़ी वाइब बने. Who is not a fan of a song that has crazy flow backed by mind-boggling rhymes and lyrics and a lot of swag? Fall Off is what Krishna is known for, being cocky and going ham on the beat while being cocky. हर बीट पे किला बना मर्जी से कोल्ड मेरा फ्लो, तो शब्द भी मेरे बर्फीले चाहिए इन्हें स्मोक तो लो बनूंगा चर्सी में, बातें करे जो प्रोवोक करे वो बर्फी है. This track is super energetic, and अगर आप भी ड्राइविंग करते वक्त थोड़े upbeat गाने सुनने पसंद करते हो, I think this would be a great choice, because in this track the words are slapping hard against the beat and it sounds so good. इनके बारे फिक्र ना है खास, I'm at kill 'em with the venom when I hit 'em in the heart. I'm developing a rhythm and I get 'em with the bars. ये तो sentimental rappers इनका जिगर ना है hard. I'm on to the next gentlemen, I'm killing these rappers that wanna test. But instrumental फिर करूँ ना ज़्यादा flex, इन्हें कबर में सुला दूँ सी I put 'em all to rest. Fall Off for me is the best track from the album,
even now. इतने साल की मेहनत करे जज इन मिनट मेरे वजह से बेहतर करे ये गंदे से लिरिक्स इनके धंधे हैं गिमिक के तो बंदे हैं टिमिक. So that was it for the review. Please do let me know your opinions in the comments below. Don't forget to do that. How would you rank the tracks in the album? Would it differ from mine? How much would it differ? Comment करके बताओ. If you like the video, then consider hitting the subscribe button. You can also support this channel by buying my merch. I'll put the link in description. Follow me on Instagram. My handle is @ROHANCARIAPPA. Until next time, it's me Rohan Karyappa signing off. काम कर ऐसा जो कर दे अचंभित दफन करके मन से भावना चलन की न खंडित सी मूरत सा बन के कलंकित जी सच के उजाले में ना हो के भर मित हर दिन ना होती है दिवाली 8 4 दिन का चक्का चौने फिर